Hello students, good morning to all. I hope that you all are safe at your homes. In the last class of English literature, we have discussed the point number 2 on time. Now we are going ahead to the one of the most point for your syllabus on Shakespeare, point number 3. Okay, now we will discuss the point. First of all, get some knowledge about the poem and the poet. The poet is John Milton, one of the greatest admirer of Shakespeare. Shakespeare का बहुत बड़ा admirer था. You know very well about admirer. उसकी प्रशंसा करने वाला. He was greatly impressed by the literary work of Shakespeare. Okay, and this poem on Shakespeare is a tribute in Hindi Shraddhanjali. This is a tribute to Shakespeare by John Milton because he was greatly impressed by the work of Shakespeare. The poem has been divided only one single stanza. पूरा जो poem है वो एक single stanza में divided है. The poem has 14 lines completely. जो पोइम है वो 14 लाइंस में है और स्पेशली शेक्सपियर या और भी कोई दूसरा पोइट हो जो 14 लाइंस की जो पोइम्स होती है दे आर कॉल्ड सोनेट. Always keep this thing in the mind. The poem that has 14 lines and a single thought, that is called sonnet, and the poem has been composed on the birthday anniversary of great Shakespeare, and it is a tribute by the poet to Shakespeare, to his work, and the another name of the poem is Song on Shakespeare. आप सभी स्टूडेंट्स को इस बात को अपने दिमाग में रखना है. इस पोएम को ऑन A song on Shakespeare भी बोला जाता है. And this poem has been composed on the birth anniversary of the great Shakespeare, and the poem has been divided into single stanza with 14 lines, and the rhyme scheme. आप सबको पहले already we have discussed about the rhyme scheme in the class. Clear? The rhyme scheme of the poem is A, B, C, D, E, F, G, whatever. Here, this is the rhyme scheme of the poem. Today, we will only discuss starting 6 lines of the poem, and in the next class, we will discuss the remaining 8 lines. And after completion of the poem, all the students will write down the explanation of the poem in the fair notebook and send the homework between the given time on Wednesday. Clear? This is the work for you. Now we are moving to the text of the poem. What needs my Shakespeare for his honored bones? आप सब जानते हैं क्रिश्चियनिटी में कोई भी जो डेड बॉडी होती है उसको बरी किया जाता है. तो द पोएट इज मेकिंग ए क्वेश्चन हियर. व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर? माय शेक्सपियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इट शोज द ग्रेट बॉन्ड ऑफ रेस्पेक्ट एंड लव बिटवीन द पोएट एंड द ग्रेट शेक्सपियर. दैट्स व्हाई द पोएट इज सेइंग माय शेक्सपियर. द पोएट इज सेइंग कि मेरे शेक्सपियर को और उसकी ऑनर्ड बॉन्ड को बरी करने के लिए, रखने के लिए किसी प्रकार के मॉन्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं. देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ टॉम, देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ पिरामिड, एंड देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग फॉर माय शेक्सपियर. क्लियर? द लेवल ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन. आप क्या है, जो भी बिल्डिंग है उसने क्या कहा? व्हाट इज द पोएट सेइंग कि उसका जो इतने सालों का प्रयास, द हार्ड वर्क of Shakespeare, the great
It means to keep, remember Shakespeare, there is no need of pyramid, there is no need of monument, there is no need of any kind of tomb. Okay? Now we are moving ahead, or that is hallowed relics should be hid. Hallowed means holy, relics means part, उसका जो अवशेष होता है उसको relics बोलते हैं. तो उसके बाद what is the poet saying कि शेक्सपियर के जो ऑनर्ड बोन्स हैं, उसके जो अवशेष हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, उनको, उसके जो सेक्रेड पार्ट्स हैं, उनको रखने के लिए देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ टॉम, मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग, ओके, एंड पिरामिड. अंडर स्टार पॉइंटिंग पिरामिड, स्टार पॉइंटिंग इसमें इस जो पिरामिड्स आर मोस्टली फाउंड इन इजिप्ट. क्लियर? और उनका जो पॉइंट शेप होता है स्पेशली ऐसा लगता है जैसे वो स्टार की तरफ उसका मुंह है. क्लियर? तो द ऑल द फोर लाइंस हैव द सेम मीनिंग. No need of any kind of building, no need of any kind of tomb, no need of any kind of monument for the great work of Shakespeare, for his honored bones, usko to keep him in the memories. There is no need of such kind of buildings. Dear son of memory, Shakespeare has been called dear son of memory. It means all the readers who read the great work of Shakespeare, the great literary work of Shakespeare, they remember him continuously, they remember him, and they will always remember him for his great literary work, and he is remembered even today for his great literary work. That's why Shakespeare is called dear son of memory, great heir of fame. Here means what a person deserves, उत्तराधिकारी, great heir of fame, and Shakespeare deserves the fame for his great literary work. उसका जो great literary work है उसके लिए वो respect, honor और fame को deserve करता है. Clear? With need thou such weak witness of thy name. तो शेक्सपियर के इतने बड़े नाम के लिए, इतने बिग नेम के लिए ऐसी वीकनेस जैसी बिल्डिंग्स की, ऐसी वीक मॉन्यूमेंट्स की, टॉम्स की, पिरामिड्स की कोई नीड नहीं. द पोएट इज मेकिंग एन अपील टू द पर्सन्स. Here there is no need of any kind of building to keep Shakespeare in memories. Clear? That's all for today. We have discussed the starting 6 lines of the poem, and I hope that all of you have got